Story of tithwai. It is written by Saadat Hasan Manto. The story begins with Indian and Pakistani soldiers. It's like a standoff. It's not a war that is going on. Indian and Pakistani soldiers, they are both entrenched in their positions along the nation's border in a mountainous area. तो एक माउंटेनियस एरिया में इंडिया और पाकिस्तान दोनों के सोल्जर्स entrenched हैं. Neither side has advantage in the war. There are no air forces or air force academy that is involved, and heavy artillery is not in their armaments. Basically, heavy artillery नहीं है और air force involved नहीं है. It's like a standoff, as I said. The, it is more of a standoff than a battle. The peace of the mountains pervades in spite of the tension. जो पीस है माउंटेन्स का वो परवेट कर रहा है इन स्पाइट ऑफ द टेंशंस. फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, बर्ड्स आर सिंगिंग एंड क्लाउड्स आर स्कडिंगली लेजीली थ्रू द स्काई में क्लाउड्स फिल्ड हैं, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, बर्ड्स आर सिंगिंग. मानतो कंपेयर करता है नेचर को टू अ सिम्फनी दैट प्लेज ब्यूटिफुली विद एंड द men with their guns to discordant notes. बेसिकली मांटो कंपेयर कर रहा है कि इस स्टैंड ऑफ या वॉर से कोई इफेक्टेड नहीं है नेचर. फ्लावर्स अपने पेस पे ब्लूम कर रहे हैं, बर्ड सिंग कर रही हैं, क्लाउड्स आर लाइक स्कडिंगली और मूविंग लेजीली थ्रू द स्काईज. मानतो कंपेयर कर रहा है नेचर को उस सिम्फनी से जो प्ले कर रही है ब्यूटिफुली एंड मेन विद देयर गान्स टू डिस्कॉर्डेंट नोट्स. पीपल विद बोला ना बेसुरा गला कि तुम मत ही गाओ, तुम खराब कर दोगे. डिस्कॉर्डेंट बेसिकली मीन्स जो स्पॉइल कर रहा है. तो यहाँ पे नेचर एक सिम्फनी जो प्ले कर रही है ब्यूटिफुली, फ्लावर्स, बर्ड्स, क्लाउड्स, उसको जो लोग गन लेके खड़े हैं वो उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं. एक्शन बिगिन होता है इंडियन कैंप में. वहाँ जमादार हरनाम सिंह और नाइट वॉच वो खड़े हुए हैं. एट 2 o'clock ही वेक्स गंदा सिंह टू टेक ओवर द वॉच. ठीक है, ये प्रोटैगनिस्ट हैं सारे ही, मतलब कैरेक्टर्स. ऐसा सच कोई प्रोटैगनिस्ट तो डॉग ही है देखा जाए तो. 2 o'clock वो गंदा सिंह को उठा रहे हैं कि अब तुम्हारी बारी है, तुम देखो. एंड ही लाइज डाउन टू सिंग अ रोमांटिक सॉन्ग अबाउट अ पेयर ऑफ शूज विद स्टार्स ऑन देम. बंता सिंह जॉइन्स इन विद अ सॉन्ग अबाउट लव एंड ट्रेजेडी. तो जमादार हरनाम सिंह जो नाइट वॉच पे थे उनकी ड्यूटी ओवर हुई है. अब गंदा सिंह वॉच कर रहे हैं और जो हरनाम सिंह है वो एक रोमांटिक सॉन्ग गा रहे हैं अबाउट अ पेयर ऑफ शूज विद स्टार्स ऑन देम, काइंड ऑफ पेट्रियाटिक सॉन्ग. ओके, बंता सिंह ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें इस गाने में अबाउट द लव एंड ट्रेजेडी. द सोल्जर फील्स सैडनेस क्रीपिंग ओवर देम. परहैप्स दे आर रिमाइंडेड दैट लाइफ शुड बी अबाउट लव रादर दैन अबाउट वॉर. एक सैडनेस सी आ रही है जब वो लव और ट्रेजेडी के बारे में गा रहे हैं. दे आर रिमाइंडेड ऑफ लव, how their life should be full of love rather than this war. Now, the barking of a dog interrupts this pensive scene. एक डॉग बार्क करते हुए आता है और ये सीन डिस्टर्ब हो जाता है. बंता सिंह फाइंड्स अ डॉग इन द बुशेस एंड अनाउंसेस दैट हिज नेम इज झुंझुन. ठीक है, तो बंता सिंह को ये डॉग दिखता है जो बुशेस में है और इसका नाम वो क्या रख देता है, झुन झुन. रिमेंबर इट. The soldiers are in good humor and pleased to see the dog until Harnaam Singh decides that the dog cannot eat if it is a Pakistani dog. तो हरनाम सिंह काफ़ी बोलते हैं ना कट्टर टाइप्स हैं. ही इज़ लाइक if this dog is Pakistani he can't eat. The other soldiers think he is joking, but he then declares that all Pakistanis will be shot, even Pakistani dogs. तो ही बोलता है कि लोगों को लगता है कि मजाक कर रहा होगा, ऐसे ही बोल रहा होगा, बट ही इज़ वेरी सीरियस. ही इज़ लाइक सारे पाकिस्तानी को मार देंगे चाहे वो पाकिस्तानी कुत्ता ही क्यों. द डॉग रिकग्नाइजेस समथिंग इन अ स्टोन एंड रिएक्ट्स विद फियर. Animals have good instinct. He recognizes that there's something terrifying about a stone and he is fearful, which seems to please Harnam Singh. Another soldier responds by leading the men in a declaration of India's Zindabad. Now people are like बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता है सोल्जर, स्पेशली नेशनलिस्टिक फर्वर जिसे हम बोलते हैं. टेलिंग इंडिया जिंदाबाद. बंता सिंह मेक्स अ साइन विद द डॉग्स नेम ऑन इट along with the information that it is an Indian dog and hangs it around the dog's neck. ठीक है, तो वो डॉग का नेम झुनझुन लिखते हैं और इट इज़ एन इंडियन डॉग लिख के डॉग के गले में डाल देते हैं.
Pakistani camp. The next morning, the dog appears in the Pakistani camp. It turns out that it had spent a few days with the Pakistani soldiers before it went to the Indian camp. पाकिस्तानी कैंप में क्या होता है, वो डॉग आता है और पाकिस्तानी कैंप में वो पहले भी रह चुका है वो डॉग. Like the Indian soldiers, the Pakistanis are tired of the war that has been dragging on for months. Both the parties are tired. Pakistani soldiers भी थक रखे हैं, Indians भी थक रखे हैं. वॉर जो महीनों से चलती आ रही है. As Subedar Himmat Khan twirls his mustache and studies a map of the Tithwai sector of India, Bashar begins to sing a song about where a lover spent the night. सुबेदार हिम्मत खान जो है वो अपनी मूछों वैसे घुमाते हैं, लाइक द डोमिनेंट मेंस टू, ऐसे अपनी मूछों को घुमाते हैं, ट्रोल करते हैं. और तिथवाल सेक्टर जो इंडिया, तिथवाल इज़ अ एरिया, ओके, इट्स नॉट द नेम ऑफ डॉग. डॉग का नाम झुंझुन है. तो इंडिया में जो तिथवाल पड़ता है उसका मैप स्टडी कर रहे हैं. बशर एक गाना गा रहा है, बशीर सॉरी, एक गाना गा रहा है अबाउट लवर who spent the night, where a lover spent the night. ठीक है. The dog when the dog appears, Subedar Himmat Singh turns the lines of the song into an accusation against Ranjan. Where did you spend the night? वो तो एक बशीर ऐसे ही गाना गाता है, वेयर लवर स्पेंड द नाइट. तो झुंझुन क्योंकि पहले रह चुका है पाकिस्तानी कैंप में, ही इसलिए वेयर डिड यू स्पेंड द नाइट, ही स्क्रीम्स. बशीर takes this as a joke and sings his song to the dog. Subedar Himmat Khan throws a pebble at झुंझुन. He thought he's joking maybe, so he sings the song to this kaha lover, where did you spend the night. But Subedar Himmat Singh is angry, quite like the Madar Harnaam Singh is our Himmat Khan. Harnaam, both are from H, okay. हरनाम सिंह, हिम्मत खान, कैरेक्टर्स के नाम याद रखो. एच वाले गुस्से वाले हैं, बशीर शांत है, बनता शांत है, बी वाले शांत है. ठीक. और गुस्से में वो एक पेबल झुनझुन पे थ्रो कर देता है. बशीर डिस्कवर करता है द साइन अराउंड द डॉग्स नेक. द सोल्जर्स पॉन्डर द साइन टू सी इफ इट कुड बी इन अ वर्ड. देखिए सोल्जर सोचते हैं कि क्या ये किसी कोड लैंग्वेज में लिखा है. सूबेदार हिम्मत खान रिपोर्ट्स द इंसिडेंट टू हिज प्लाटून कमांडर, हु इग्नोर्स द रिपोर्ट बिकॉज ही फाइंड्स इट मीनिंगलेस. वो बोलता है ना छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ा के करना. तो सूबेदार हिम्मत सिंह बोलते हैं कि कोड वर्ड में तो नहीं लिखा है कहीं. तो बोलते हैं कि कहीं कोड लैंग्वेज में कुछ ना हो. वो अपने प्लेटून जो कमांडर है उन्हें बताता है कि ऐसे ऐसे एक डॉग के गले में हमें ये मिला है इंडियन उसका. बोलता है अरे मीनिंगलेस बात है, वो इग्नोर कर देता है. कमांडर इज करेक्ट दैट द रिपोर्ट इज नॉट ऑफ टैक्टिकल सिग्निफिकेंस. इट इज इम्प्लाइड दैट हिज फेलियर टू इन्वेस्टिगेट इंडिकेट्स अ लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द रैंक. ठीक है. तो ही इज राइट, ये इट्स नॉट ऑफ सिग्निफिकेंस. तो इस वजह से इट शोज दैट अ लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द रैंक. की क्या फालतू बातें पे ध्यान देते रहते हैं. सोल्जर्स आर बोर्ड एंड सीम टू फील दैट देयर प्रेजेंस हियर इज मीनिंगलेस, क्योंकि कोई वॉर नहीं हो रही है. दे आर लाइक स्टैंडिंग ऑफ गार्डिंग. तो दे फाइंड दैट उनकी प्रेजेंस मीनिंगलेस है. सोल्जर रीनेम कर देता है झुनझुन को और उसका नाम शुनशुन कर देता है और लिख देता है पाकिस्तानी डॉग. ठीक है. Subedar Himmat Khan sends Chunjun back to his family, urging him to take the message to the enemy. The dog trots up and Subedar Himmat Singh fires in the air. Feeling bored, he decides to fire at the Indians for half an hour. The two sides exchange fire, after which Subedar Himmat Khan orders a halt. As he combs his hair, he wonders where the dog has gone. तो बोर हो रहे हैं इतने में सुबेदार हिम्मत सिंह डॉग को, जो डॉग का नाम क्या था, झुनझुन, बट इन लोगों ने पाकिस्तानी सोल्जर्स ने उसका नाम रख दिया शुनशुन. ये ट्रॉट बेसिकली होता है, इट्स लाइक टू मूव वॉक फास्ट और टेकिंग शॉर्ट क्विक स्टेप्स. जल्दी भागने लगता है जब दिखता है कि ऐसे सुबेदार वो से भगा रहे हैं कि जाओ जाओ शू गो बैक योर फैमिली. तो सुबेदार हिम्मत खान फायर करते हैं ऐसे एयर में. वो बोर हो रहे हैं, आधे घंटे तक वो लोग एक्सचेंज करते हैं फायर. फिर वो बोलता है रुक जाओ बस हो गया. अपने हेयर कॉम करता है, बोलते हैं कहाँ गया वो डॉगी, कहाँ गया वो कुत्ता. When Junjun comes around the hill where the Pakistanis are entrenched, it seems to infuriate Subedar Himmat Khan. He shoots at the dog, hitting some stones. Junjun continues to run toward him and Subedar Himmat Khan continues to shoot at the dog. ठीक है. जब when Junjun comes around the hill, the Pakistanis are entrenched. मतलब इट सीम्स टू इन्फ्यूरिएट, गुस्सा दिलाते सुबेदार हिम्मत खान को. वो डॉग पे शूट करता है. कौन? हिम्मत खान. हिटिंग सम स्टोन्स. ठीक है, कुछ स्टोन्स मारता है. झुनझुन भागता रहता है टूवर्ड्स हिम स्टिल
अच्छा बताए हिम्मत खान कंटिन्यूज टू शूट एट द डॉग, ठीक है। वो डॉग अभी भी हिम्मत खान के टूवर्ड्स आ रहा है, बट वो उस पर पत्थर मारता जा रहा है। टू अपोजिंग साइड्स एंजॉय स्केलिंग द डॉग, ठीक है। जो ये हरनाम सिंह है, ठीक है, और ये कौन है दूसरे नंबर, हिम्मत खान। हिम्मत खान और हरनाम सिंह, ठीक है, ये हरनाम है, ये हिम्मत है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ बीच में डॉग है, इस पर पत्थर मार रहे हैं, इधर एंजॉइंग की, इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है डॉग। और बेसिकली खान जो है, ये सूबेदार हिम्मत खान, ही डजंट वांट द डॉग शुड रिटर्न टू पाकिस्तानी कैंप, tells the dog it is his duty to continue towards the enemy camp। बोलता है कि तुम जाओ इंडिया की तरफ टुवर्ड जाओ। It is clear that in Subedar Khan mind fanatism has overcome any rationality। पागलपन ने कोई भी rationality, भाई जानवर है उसे क्या पता। When the wounded dog drags himself towards Harnam Singh, जमादार हरनाम सिंह shoots and kills him। जो वो बेचारा घायल है, उसी की शॉट हरनाम से वो लंगड़ाता हुआ जाता है उनकी टुवर्ड्स, हरनाम की टुवर्ड्स, वो उसको गोली मार देता है एंड ही डाइज। पहले पाकिस्तान सूबेदार हिम्मत सिंह कंपेयर्स किलिंग टू मार्टियरडम, कि भाई शहीद हुआ है, मार्टियर हुआ है। हरनाम सिंह सेज दैट ही डाइड और डॉग्स डेथ, सच अ होपलेस थिंग, राइट। Characters. Bashir is a soldier in the Pakistani army. He sings a song, Where Did You Spend the Night, My Love, My Moon. Subedar Himmat Khan, fellow soldier, turns the song into an accusation of treachery against Chunjun. Bashir is a soldier who reads a sign around Chunjun's neck that gives the dog the name written by the Indian Army. He is also called Bashire. Okay? बशीर इज़ वन जिसने वो झुनझुन के अराउंड नेक देखा था। और जो हिम्मत खान है, उन्होंने ट्रेचरी यानी छलावा, धोखा के अगेंस्ट झुनझुन, एक कुत्ते के अगेंस्ट धोखा अंजाम इमेजिन। Now, main character Chunjun is a dog. He's very trusting. He's very, very friendly. He's, unable to grasp the hatred between Pakistani and Indian soldiers. He greets both with equal enthusiasm. He's perhaps demonstrating more wisdom than those men who treats them not as Indian and Pakistani but as humans. Beautiful. Since the men have decided, however, that they are different, they expect the dog to choose sides. In his innocence, Chunjun represents the refugees and other victims of the partition of India. His death is a reflection of their deaths, even though his death is in reality senseless. The soldiers treat it as if it belongs to a cause. Subedar Himmat Khan of the Pakistani army says that Junjun has been martyred because he was killed by a member of the Indian army. क्योंकि पाकिस्तान के आदमी को जैसे जब मारते हैं तो वो क्या बोलते हैं, मार्टियर हो गया। इंडियन आर्मी के किसी ने मारा तो वो बोलते हैं मार्टियर्ड है। तो इंडियन आर्मी के किसी ने अगर पाकिस्तान को मारता है, हम क्या बोलते हैं, कुत्ते की मौत मारा है। सेज ही डाइड अ डॉग से। वेरी वेग कॉन्वर्सेशंस, ठीक है। तो ये उन रेफ्यूजीज और विक्टिम्स का है जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में फंसे हुए हैं। दे डोंट वांट टू गो एनीवेयर, दे जस्ट वांट टू लिव पीसफुली वेयर दे आर स्टेइंग, बट they force them to drag out कि बाहर निकलो, बाहर निकलो। And in that rush, nothing good happens for anyone. As a member of Pakistani army, Subedar Himmat Khan watches over the tithwai sector in India in an almost possessive way. Possessive मतलब हथियाने के purpose से। He has large mustache that he twirls, perhaps demonstrating his vanity. With his fixation on what is Pakistani and what is Indian, Subedar Himmat Khan represents unreasoning divisiveness and hatred. ठीक है, लाइक पाकिस्तानी क्या है, इंडियन क्या है, इट रिप्रेजेंट्स हिज अनरीजनिंग डिवाइसिवनेस, ठीक है, डिविसिवनेस की कैसे डिवाइड कर रखी है हर चीज़, और हेट्रेड कितनी भरी हुई है। ही सेंड्स Chunjun into the enemy camp, refusing to let him come back. By firing at the dog, Subedar Himmat Khan means to scare him. He thinks that Chunjun's terror is amusing and does not allow him to return even the dog when the dog is injured. डॉग को चोट लग गई तब भी ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में फंस रखा है, Subedar Himmat Khan demonstrates a disregard for life that comes blindly with following a cause. Now, when you follow a cause blindly, the disregard of life that happens, he is the representative or he is the one who's demonstrating. Very, you can kind of call him a evilish kind of a character in my opinion. Don't write it, but
The youngest of the Indian soldiers, Banta Singh, has a very sweet voice. He sings a love-lorn words that inspire sadness in others. He makes them feel कि हम war में क्यों हैं? Why aren't we falling in love or something like that? He's also the soldier who finds Sunjan in the bushes and gives him a name. He does not see the dog as enemy, nor does he wish to make the dog take sides. He sees the dog as a poor refugee. He presents a viewpoint that is more rational than that of his fellow soldier Jamadar Harnam Singh, who wants to make the dog a point of contention between the two armies. He's a very rational kind of a fellow, very sweet voice. He sings song and he thinks of them as a poor refugee. Now, Ganda Singh is also another member of Indian Army who's the first to be awakened by Jamadar Harnam Singh, who's on night watch. He, along with other soldiers, is affected by the melancholy words of Jamadar Singh's song. Jamadar Harnam Singh's song. इसका कैरेक्टर स्केच इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन इट. A member of Indian Army, Chamadar Harnam Singh, the first character who's introduced in the story, is on a night watch, wakes the others. As he lies down, he sings a sentimental song, this Punjabi folk song. Chamadar Harnam Singh underscores the similarity between the groups and futility of their fight. He underscores the similarities and futility of fight, but he also represents fanatism, pagalpan, when before feeding Junjun a cracker, he demands to know if the dog is an Indian. Jamadar Harnam Singh seems to lack compassion. He's the one who, for sport, shoots and injures Chunjun. He's also the one who kills Chunjun, then says he has died a dog's death. He's shown to be more brutal than our Himmat Khan, Even before feeding a cracker, he asks whether he is Indian or Pakistani. He has no compassion overall. Themes in the story: the darkness, light. They demonstrate the difference between the men and natural world around them. Darkness represents the men, blindness, and what is negative, and light represents nature. Men, mm, darkness is like the blindness and all what is negative, and light, it represents the positive side. Soldiers, light fires, huge fires are lit up in their camps to ward off this darkness. Yet they are not able to overcome either the darkness of night nor their own blindness of prejudice. You know, their own prejudice prevails still. The biggest fires they can build can only illuminate a small patch of ground and do not enable them to see their enemies or see within themselves. बेसिकली यहाँ जो डार्कनेस का थीम है वो इट्स नॉट मोर अबाउट नाइट बट द blindness of spite revenge that has taken over this dark negative side of them. By contrast, Manto writes, the morning broke as if someone had switched on a light in a dark room. It spread across the hills and valleys. Nature is capable of producing an all illuminating brightness that men do not have. Beautiful. Nature is capable of producing an all illuminating brightness that men do not have. Basically, morning was like एक अंधेरे में एक उजाला, spark of new hope, new beginning, and maybe of repent कि हमने क्या कर दिया. Unity and disunity. Pakistanis and Indians see themselves as separate from each other. There's no common human feeling between them. Even when both sing songs of romance and long for better days, there's no common feeling that they have for each other. The stream zigzagging down in the valley is like a literal line in the sand that emphasizes the division that men are maintaining. वैली में जैसे स्ट्रीम ऐसे बह रही है, the zigzagging of the stream, it's like the literal line that emphasizes the division of men that they are trying to maintain. ये पाकिस्तान, ये इंडिया एंड ये जो zigzag वाली लाइन है, it's trying to indicate the differences. Like the other elements of nature in the mountains which move lazily, the stream moves ferociously like a snake. स्नेक को हम एक नेगेटिव एनिमल की तरह जो डसता है, तो अदर flowers are blooming, clouds are moving, other are like slowly, lazily, but the stream is like flowing furiously like a snake. So this is basically the comparison. Important questions, you can just go through them. And war like humans versus peaceful nature.
The mountains of Tithwal, these are calm, cheerful, but the soldiers are determined to kill. While it would be natural for them to adapt to the peaceful surroundings, the soldiers remain combative. इतनी peaceful surrounding है, they should be more like calm and cheerful like their surroundings, but they are determined to kill. Chunjun enter करता है story. These soldiers have been inactive for some weeks, no progress like on either sides. The mood is one of dangerous idleness. मतलब ना खाली दिमाग शैतान का घर. There's a harbinger of the death to come, though there is nothing to gain from exchanging fires. The opposing sides let off ritual shots daily, unable to destroy each other. The soldiers destroy a harmless dog that is an element of nature. Unable to destroy each other, this soldier, he destroys a harmless dog that is an element of nature because he's the only victim available. Junjun becomes a casualty of soldiers that need to satisfy their bloodlust. Humankind's brutality is visited upon nature. It is enough merely to scare the dog and make him run in terror. So humankind's brutality is signified. It is enough merely to scare the dog and make him run in terror. They need to destroy him. Though Subedar Himmat Khan first warns Junjun to him, the dog's death proves that the Indian forces are killers. Jamidar Harnam Singh, whose shot kills the dog, seems even so to blame the Pakistani forces. The two sides do not recognize that both have acted cruelly and absurdly. There is no regret for killing as there might be in peace time because it is seen as an act of war. Very, you know, very tragic scene. एक हार्मलेस डॉग को मार दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को तो मार नहीं पा रहे हैं, तो एक हार्मलेस डॉग को मार दिया है. ही बिकम्स अ विक्टिम. यू नो, अगर एक पीस टाइम में किसी डॉग को मारता तो दे माइट हैव सम रिपेंट और रिग्रेट, बट क्योंकि वॉर का टाइम है, इस टाइम बोलते हैं किसी को मारा है तो कोई रिग्रेट नहीं होता. पीपल दे आर satisfied to you know blood lust होता है ना, satisfy करने के लिए दे आर रेडी टू किल अ victim, you know innocent victim. So it's like both of them are killers, ठीक है. They are blaming each other, playing the blame game, but the innocent people are getting tracked in between. The difference between nature and humankind is understood by the fact that seasons are changing as the story takes place. The changes occurring gently, the days and nights are mild, while some literature depicts the season in conflict. Manto's story shows that nature, even opposites such as summer and winter, they flow peacefully into each other. It seemed as if summer and winter had made their peace. Manto writes, the men on the other hand, although they are very much alike, cannot accept each other. He wants to say कैसे विंटर और समर भी एक दूसरे में फ्लो करते हैं, बट द ह्यूमंस डोंट फ्लो इनटू ईच अदर. इट्स वेरी वेग काइंड ऑफ स्टेटमेंट कि कैसे ह्यूमंस एक जैसे हैं तब भी दे आर नॉट लाइक वन अनदर. So historical context, we know it's like set between Muslim and Hindus के context में. I'll tell you little about the pastoral setting. Pastoral literature portrays nature as being idyllic, peaceful, and free of constraints. And struggles of human society. Basically, ये pastoral जो setting है ग्रास वगैरह में, ये ह्यूमन कैरेक्टर्स को सोलेस फाइंड करने के लिए help करती है, और पीस दैट आर नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन मेड सेटिंग. सिटी में यू कैंट इमेजिन अ पीस, इसलिए pastoral setting it allows human to find solace and peace. The story set in the mountains of Tithwal during temperate and pleasant days in late September. There is peace in the mountains, but instead of escaping to the innocence of nature, the soldiers bring war with them. The men cannot enjoy the pleasant surroundings because they are not here to enjoy but to kill. This is the setting of the story. It's like a journalistic style. ठीक है, Manto does not tell his readers what to think, but lets the facts speak for themselves. He uses dialogue to tell the story. Further, it contributes to his journalistic style. The contrast between the natural surrounding and camouflaged soldiers, it creates like tension and mood of suspense. So it's like setting of the story is like the contrast, people have. The boredom and melancholy is built. जब dog enter करता है, people are not even greeting him. Even though people are amused by survival, it's like boredom को break करने के लिए, still it's considered like a potential enemy.
Okay, Subedar Himmat Singh, he's treating him with harsh treatment. Story Junjun को as potential enemy and informant treat करती है of enemy camp. Neither of them, thinks about the dog. The doom that has been hinted at throughout the story, when the dog is trying to scramble from one side to the other, he can find no safe haven. Chunjun's pitiful end is later foreshadowed by the increasingly irrational and brutal behavior of the soldiers, which is emphasized by its contrast to the peaceful set. I think that's it. Thank you so much.